Happy morning, students. So, we were doing chapter 12 from a railway carriage. It's in your book, page number 122. Okay, we have done till here. I'm explaining the summary once again. Listen to it very carefully. Whatever I'll tell you, it's about a railway carriage that it moves faster than the ferries, faster than witches. It crosses bridges, houses, hedges, and ditches, and it is like a troop of battle, like a soldiers, as they move towards the enemy. Similarly, train also moves towards its target. It crosses in the way you see with hills, plains, horses, cattle, and many more things. The poet tells that it crosses fences and many more things. It passes very quickly. A raindrop fall and then a heavy waterfall rainfall, and one by one we cross the different stations, and it stations look like painted picture. Those are like a painted pictures. Now here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. So R.L. Stevenson says that poet observed from his window that a child climbing a steep ground from by himself with great difficulty. Clamber means climbing, and scramble means move quickly using both the legs and hands. He moves with great difficulty. At the same time, the child was gathering berries. It's a bramble is a thorny, means कांटे वाला एक white wild plant होता है. Okay, so he was collecting the berries. He was collecting the blackberries. He also noticed homeless man. He noticed that there is a homeless man who stands. वो वहाँ खड़ा होता है और देखता है. क्या देखता है वहाँ पर? कि लोग वहाँ पर कैसे एक ट्रेन के अंदर रह रहे हैं, ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं. ओके, और वो ये चीज़ देखकर ही वॉज वेरी स्टॉनिश, वो हैरान होता है. एंड अ वुमेन इन अ टिपिकल विलेज सेटिंग हु वर मेकिंग गार्लैंड्स ऑफ डेजी फ्लावर्स. एक वुमेन है जो गार्लैंड होता है माला, एक क्राउन टाइप से माला. शी वॉज मेकिंग ऑफ डेजी फ्लावर. डेजी इज अ flower, and she was making the garlands from that. Stringing means garland, making a garland. She was making a garland from with the help of daisy flowers. And at the end of the poem, the poet sees a cart full of load and its driver sitting on the top of the load, moving slowly on the highway. अब आपने देखा है ना, एक कार्ट के ऊपर बहुत सारा लोड हो जाता है, फिर वो बड़े धीरे धीरे चलता है, और ड्राइवर जो है कहाँ बैठता है? जो कार्ट चला रहा होता है, ही सिट्स ऑन द लोड एंड ही वॉचेस दैट ऑल्सो. और वो कहाँ चल रहा होता है? ही वॉज वॉकिंग ऑन द हाईवे, मूविंग हिज कार्ट ऑन द हाईवे. ही ऑल्सो सीज अ वाटर मिल एंड रिवर ड्यूरिंग हिज जर्नी. उसने अपनी रास्ते में क्या क्या देखा? वाटर मिल भी देखी एंड रिवर्स भी देखी. एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उसके सामने आती थी और एकदम से चली जाती थी. ग्लिम्स मीन्स हैविंग अ क्विक व्यू, जो एकदम से चला जाता है. ठीक है. एवरीथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वैनिश्ड.
ही जस्ट हैव गेज्ड देम, उससे घूर घूर के वो देख रहा था. जस्ट एक उनके उसके सामने एक वो आ रहा था, एक सीन आ रहा था, और जो साथ ही खत्म हो जाता है. इन दिस पोएम पोएट इज मेकिंग पेस एंड लाइवलीनेस ऑफ रेलवे जर्नी. वो एक्सप्लेन कर रहा है दैट व्हाट टाइप ऑफ रेलवे जर्नी वी कैन हैव, वी आर हैविंग. Kid, we looks out of window. Everyone knows whenever we sits in the train, we always child have a, all the children have that curiosity what we will look out of the window. They start gazing everything, and they have a glimpse of all the things whatever. Let's discuss its true false. The speaker in the poem is on a train and is looking out through the window. Is it true or false? It's true. The train is faster than ferries and witches, but slower than hedges and ditches. It's false. A train is faster than everything. The child is frightened by the sight of the train. It's also false. He was not frightened. वो डरा नहीं था ना. The sight of the meadows and plains go by very slowly. This is also false. हर चीज़ बहुत फास्ट जा रही थी ना, जस्ट एक इंस्टेंस, एक ग्लिम्स ही दिख रहा था. ग्लिम्स मीन्स क्विक व्यू. द स्पीकर डज नॉट सी any animal from the train. This is also false. He had seen horses, cattle. Okay, so first is true and rest all are false. Okay, now we will discuss its word meanings, which you have to do in your notebook. Don't worry, I'll send the PDF of both these true, false and word meanings. First is troops. Troops means soldiers. Troops gave a blow to the enemies. You have to make your own sentences as you do in the classroom na. Means soldiers ने दुश्मनों को भगा दिया. Glimpse means quick view, एक जल्दी से व्यू लेना. I got a glimpse of the celebrity in the mall. मैंने मॉल में एक सेलिब्रिटी को हल्की सी झलक देखी थी. नेक्स्ट इज ट्रैम्प. ट्रैम्प इज होमलेस पर्सन, जिसके पास घर नहीं है. आई सॉ एन ओल्ड ट्रैम्प स्लीपिंग बाय द साइड ऑफ द रोड. आप देखते हो ना, जिनके पास घर नहीं होता, होमलेस पीपल होते हैं, दे यूज टू स्लीप एट द रोड साइड. विंक ऑफ एन आई. एन इंस्टेंट मीन्स पलक झपकते ही जो चीज़ गायब हो जाती है ना, दैट इज अ विंक ऑफ एन आई. आई विल प्रूव इट इन अ विंक ऑफ एन आई. तुम इतना पलक झपकोगे और मैं ये प्रूव कर दूंगा. ओके, देन इज लंपिंग. लंपिंग मीन्स मूविंग स्लोली. द कार्ट वॉज लंपिंग ऑन द हिल्स. कार्ट जो है हिल्स पे बहुत स्लो चलता है. आई होप this chapter, true, false, and word meanings and sentences are clear to you all. You have to do the true, false, and word meanings and sentences and try to make your own sentences. Thank you. Have a nice day. And tomorrow we'll do the question answers and RTCs.